when we started Novo in January 1st, 2021, Jugnu banned us, our franchisee. Right. Kashmiri community has suffered a lot. We deserve at least some we deserve relief that. and leisure in life. कि हाँ भाई हमारे पास भी ये है. If you don't do something that you have always wished for, you'll regret for the rest of your life. थैंक यू सो मच माजिद भाई, फ़हीम भाई, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आप आ गए. तो और इवन टुडे संडे, लेकिन आप फिर भी आज काफ़ी बिजी थे एंड मीटिंग्स के दौरान भी आपने टाइम निकाला टू बी ऑन दिस पॉडकास्ट. तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, आई अप्रिशिएट दैट. तो बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद द पॉडकास्ट, आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप थोड़ा अपने बारे में बता दें तो ताकि हम आपको बेहतर जान पाए. So I'll start with my schooling. I did my schooling in Burnham. And उसके बाद I joined SP because I want to not go to school. So I started coding during that while. And I learned a lot of things, and I wanted to start with the startup of kind of an OLX in Srinagar. Okay. But that didn't work out. Obviously, you need to fail a couple of times in order to start something. Did my schooling and joined BTech CSE, despite my parents wishing for BTech in civil. उस पर बहुत सारे लोग जा रहे थे सिविल में, सिविल इंजीनियर कश्मीर सिविल, हाँ सबको सिविल इंजीनियर बनना. तो आई चोज दिस बिकॉज आई न्यू ओके व्हाट आई वांटेड टू डू इन लाइफ. तो आई मूव्ड अहेड एंड ड्यूरिंग माय बीटेक वी स्टार्टेड अ फर्म आउटसोर्सिंग कंपनीज, उनका काम लेने का. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम दिस आइडिया केम टू मी कि व्हाई नॉट स्टार्ट दिस सर्विस इन हियर. एंड एट दैट टाइम ओला एंड उबर वर एट पीक. तो या दैट्स हाउ इट ऑल बिगन. Yeah, connected with a couple of friends at my workplace. पहले से ही पता था यही करना है. हाँ 2017 से we had this in mind कि we need to do this, and we planned to do this in 2019 जब यहाँ पे 4th August में all communications were shut. So I had to kind of postpone this plan, and I went back to Delhi to a regular job. Okay. And at that time another cab service started here, JK Cabs. Right. So I was like okay. That's a different service. हाँ that was a different service. मुझे लगा था JK Cabs ही Novo Cabs rebrand. नहीं no. Okay. Yeah. Okay. So JK Cabs came in and I left my job. You were working in Delhi? I was at Times of India. Okay. Yeah. So I came back and I was like, nahi. If I had thought about this first, I need to go and start this. So I came back and I was working on my own product. But that product was miserable. Like it was a total failure. I didn't want to start with it. So I approached a company. What was that about? It was the same thing. Okay. But the same application was not working well. Okay. So since I needed to gain some traction from the people that there's another service, I went to Jugnu and I approached them for a franchisee model in Srinagar. Jugnu was based in where? Chandigarh. Samar Singla is the CEO. Okay. Yeah. So I started it in I guess September 2020. So we worked with them for 3 months, but we figured out a lot of problems with the franchisee model. And since we already had developers in place, so I contacted Fahim that Would you mind sharing what sort of problems were there in franchisee model? Franchisee model mein you don't have complete control over your application. Let's say in Srinagar the Ola and Uber model it won't work perfectly. ठीक है? So how do you configure your application? So you tell the Jugnu wale like the people that हमें ये चाहिए. They won't do it just for Srinagar ना. Okay. They don't have appointed resources for it. Right. So we had to make some niche changes for this niche market. जो specific हो श्रीनगर के लिए ही. Exactly. So I contacted Fahim and I told him this is how we need to start. You'll have to take care of the operations and the financials because I can't look after all of it. I look after the tech, the marketing, the design, but you look after marketing, finance, and that's how it started. And when we started Novo in January 1st, 2021, Jugnu banned us, our franchisee. They took it away because obviously, according to their agreement, we were dealing with another competitor, which was us. Right. So yeah, that's how it all started. Fahim bhai? So I started my schooling in Little Angel. So after that, I went to SP College. So after that, You met in SP College or? No, we met through my close friend. He's his cousin. Oh, okay. Yeah. So I did my graduation in Islamia College. After that, I did my MBA in Kurukshetra University, Haryana. Okay. So as Majid told you about all this, so I started in January 2020 with Majid. So at that time, he started with Jugnu. After that, he started with this Novo Cabs. So जो कंपनी का फाइनेंस एंड अदर थिंग्स जो थे, तो फिर हमने डिसाइड किया कि मैं
फाइनेंस और ऑपरेशन हैंडल करूँगा, माजिद जो है पूरा टेक्निकल ये देखेंगे। उस टाइम पे आपने like, कोई जॉब की थी या? हाँ, बिफोर दैट आई वाज वर्किंग इन लीडो लर्निंग, इट वाज अ दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, आई वाज वर्किंग ओवर देयर। बट आफ्टर दैट जब कोविड स्टार्ट हो गया तो सबका वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया, तो मेरा इंटरेस्ट उसमें कम होने लगा लीडो लर्निंग में। सो आई थॉट कि हाँ करना चाहिए। सो जो उस टाइम पे फिर मैंने स्टार्ट किया माजिद के साथ कि फाइनेंस को देखना, कैसे हम इसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे ले आए, कैसे हम अपनी एक्सपेंसेस कम करें। नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब जहाँ पे हमें ना कोई प्रॉफिट हो ना कोई लॉस हो, क्योंकि So इनिशियली एक that's स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप में लॉस तो होता ही होता स्टार्ट में है। हमें हाँ, लॉस भी तो होता है। हमें ऐसी ठीक। टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है जिसकी वजह से हम अपना लॉस कम कर सके, ठीक है, मतलब ताकि अगर- हम एक पॉइंट पे आ जाए जहाँ पे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट तो नहीं हो रहा तो कम से कम लॉस भी नहीं होगा। बिल्कुल। ओके। exactly. तो वैसे हमने स्टार्ट किया कि पहले इसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंचाना है, क्योंकि काफ़ी एज हमें कोई इन्वेस्टमेंट बाहर से ली नहीं है, कोई इन्वेस्टर है नहीं हमारे पास, तो जो भी किया खुद से ही किया। तो हमें ये ज़रूरी था कि हमारे फंड्स जो है वो अवेलेबल रहे, ताकि हमारे पास जो डेवलपर्स काम कर रहे हैं या बाकियों की, एज वी ऑल नो कि फाइनेंस इज लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। Right. सो उसको ज़रूरी था कि ऐसे यूज़ करना ताकि हमारी जो कंपनी है वो चल सके। सो वो सब चीज़ें की स्टार्टिंग में, काफ़ी जो माजिद सैलरी से पैसे कुछ जोड़ के इसमें डालते थे, बाकी मैंने यहाँ से किया, तो हमने इसको आगे तक पहुँचाया। मतलब इसमें एक्सटर्नल इन्वेस्टर कोई नहीं है? नहीं, ऐसा सच कोई अपनी एक्सटर्नल, बस It's all bootstrap. एंड Yeah. मे आई आस्क कितना आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट गया होगा इसमें? I guess I started with, so the investment was not vested all of a sudden. It was in, I guess, batches of 4 lakhs per 2 months. 4 Okay. lakhs per 2 months. So I would say about abhi tak it's been 20 lakhs for Okay. मोर 2 देन years. दैट आई थिंक। More than that ओके। vested in. मतलब वो शरीफों की तरह नहीं रह सकते थे कि हो गया कॉलेज हो गया जॉब ले लो और बैठ जाओ, हाँ लाइफ सेट है, मतलब क्यों पंगे लेने थे? जॉब कर ली 5-6 साल, बट उसमें मज़ा नहीं है. ऑब्वियसली जब इंसान अपना कुछ स्टार्ट करता है तो अंदर से करने की चाहत भी होती है, क्योंकि आज जैसे संडे है, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, आप देखते हो कि फ्राइडे आपका टाइम कब खत्म हो जाएगा तो हम निकल जाए, निकल जाएंगे। फिर मंडे को मन ही नहीं होता है काम करने का। जैसे सैटरडे संडे और कोई टाइम का ये नहीं है कि सुबह 10 बजे आना है शाम को 5 बजे जाना है, तो हम सुबह 9 बजे से ही स्टार्ट करें शाम के 10 तक, वो अंदर से सर्टिफिकेशन रहती है कि हाँ जी हम अपने प्रोडक्ट पे काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं, जिसको मतलब चलो अभी हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं 4 साल 5 साल, तो उसके बाद शायद हमें कुछ अच्छा मिले। उसमें हमें वही सेम कांस्टेंट, वही सैलरी, वही लाइफ, तो थोड़ा सा था वो कि हमने इसीलिए स्टार्ट एडवेंचर चाहिए था थोड़ा। एडवेंचर। And also it's about, catering to your community. Right. Kashmiri community has suffered a lot. We deserve at least some we deserve relief that. and leisure in life. कि हाँ भाई हमारे पास भी ये है. If nobody is willing to start it, that's because we're too afraid कि भाई पैसे डूब जाएंगे. But they don't look at the other part, like how does it ease out लोगों की life? Does it help an old woman who doesn't have, let's say, a son to take care of her? Does she have transport available? Does she have to walk a distance of 500 meters, 600 meters to get an auto? Right. Are you able to help her? So if that gives you a sense of responsibility कि नहीं भाई I've achieved something, I've been able to help someone in life, not directly but through someone. But through हाँ, service. so in the middle they are also helping someone. So I think that's a blessing, to be serving for your community in this sense. So yeah. आई एम श्योर दैट जैसे ये ना काफ़ी लोगों ने सोचा होगा दैट विल स्टार्ट अ सर्विस लाइक दिस, एंड आई हैव पर्सनली मेट अ कपल ऑफ पीपल कुछ साल पहले जैसे कहते थे कि वी कैन डू दैट, ठीक है, बट मैं बोलता हूँ रीज़न क्या था, वो कह रहे थे कि अगर आसान होता तो अभी तक किसी और ने किया होता ना, मतलब किसी और ने अभी तक नहीं किया, दैट मीन्स शायद ये करने लायक है नहीं। Tough. सो डिड यू हैव दैट थॉट, एंड इफ यस देन उसका क्या काउंटर था आपके पास? टफ था कि मुश्किल थी चीज़ें करनी, कि हम सोचते थे कि ये लॉस होगा, ये ऐसे होगा, बट एज सच हमारे पे रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज सच अभी है नहीं कि हम डरे कि वो नहीं होगा, ये नहीं होगा। हमने सोचा क्योंकि घर पे थे, कोविड का टाइम था, लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम थी, क्योंकि डरते थे ऑटो में इससे पहले और कोई आया हुआ, तो दूसरे कोई, आप अगर किसी को कोविड है तो दूसरा डरता था, तो वो सब चीज़ें थी। हमने सोचा कि अभी स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे, इफ नॉट नाउ देन व्हेन। और कश्मीर में जैसे कि आप देखोगे कि बाहर से हमारे दोस्त जो जिन कंपनीज में हम काम करते वो यहाँ आते थे,
तो उनको काफ़ी दिक्कत होती थी टैक्सी की, क्योंकि उनको कोई ट्रैवल एजेंट ढूंढना होता था या कोई यूनियन। बट अभी के टाइम पे लोग वैसा चाहते ही नहीं, वो सब सर्विसेज अपने फ़ोन पे चाहते हैं कि हम देखें गाड़ी है, इतने पैसे ले रही, ये सब चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें भी थी हमारे मद्देनज़र में कि हम ऐसा करें, ये करें। तो इनिशियली थोड़ा बहुत तो हुआ कि ना ऐसे हो वैसे हो, बट खोने के लिए भी कुछ था नहीं। तो ये सबसे अच्छी बात है ना, मतलब व्हेन यू आर स्टार्टिंग अप यंग, तो आपके पास ज़्यादा कुछ खोने को है नहीं, तो एंड टू टैकल द द थॉट जो आप कह रहे थे कि आपने सोचा कि फिर कोई और ही कर लेता है, तो अगर इतना आसान होता। सो टू टैकल दैट थॉट, इंसान के दिमाग में यही आता है कि फ्रॉम योर लिटिल एक्सपीरियंसेस इन लाइफ के, इफ़ यू डोंट डू समथिंग दैट यू हैव ऑलवेज विश्ड फॉर, यू विल रिग्रेट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. So I said कि ठीक है, if it'll like give me a blow for the rest of my life or a little of it, I'll be able to bear it. But the regret of not having done it would be a problem for me. Exactly. So I think that's how we tackled that. सबसे होता ना, जब अगर कोई और फिर कर लेता और वो सक्सेस हो जाता, बड़ा होता है, सोचा था उस time। Exactly. So that's why when JK Cabs started, I was like नहीं भाई, कोई और start करा है, we have to jump in back because I thought it first. So yeah. एंड आई रिमेंबर एज आई टोल्ड यू ना कि मुझे लगा था ये सेम ही है, बिकॉज जेके कैब्स मैंने एक बार यूज़ किया हुआ है। उसका आई थिंक था 30 to 45 मिनट्स उसका था, मतलब वेटिंग टाइम निकाला 30 मिनट्स पहले। एंड बैक टू टुडे जहाँ पे आज 5 मिनट के अंदर हमारा नो आ जाता है, सो ऑब्वियसली दैट इज़ अ ह्यूज लीप। सो हैट्स ऑफ टू यू पीपल फॉर डूइंग दैट। तो इस स्टेज में जो आप कह रहे हैं ना कि आप दोनों के पास जॉब्स थी एंड दूसरा ऑप्शन आपके पास ये था ये स्टार्टअप करने का, जहाँ पे आपका अराउंड आप कह रहे हैं कि 20 lakhs का आपका इन्वेस्टमेंट मतलब you had to bear this huge cost of it. मेरे पास अभी भी है। I still work. You are still burning. Yeah, I have to burn. Yeah. मतलब इस टाइम पे फैमिली का क्या ये था रिस्पांस था कि जॉब छोड़ के ये करना है जिसमें अभी तक प्रॉफिट, उनको भी अपना शेयर मिल जाता है सैलरी से, तो but we burn some money as well. But still, like उस टाइम पे when you disclose to your families that we want to start up and we want to leave our jobs, तो उस वक्त क्या रिस्पांस था? Were they support you or? Yeah, obviously, if you come from a typical Kashmiri family, which I believe most of us are, तो they'll be like नहीं रिस्क क्यों लेनी, why would you leave a job? एक तो प्राइवेट जॉब मिल गई है और अब ये भी छोड़ रहे हो, गवर्नमेंट तो मिली नहीं तुमसे, है ना? तो वो होता है हर एक फैमिली में, माँ बाप बोलते हैं कि नहीं ये नहीं करना, तो बिजनेस नहीं करना, बिजनेस में रिस्क है, उसके लिए बहुत ये होना चाहिए। तो हाँ, आई गेस ignoring those comments from your parents is the best thing you can do, because if you program your mind in the way कि you need to be ready for it कि नहीं, parents will be against you for something. And I'm assuming आपका business background नहीं है अगर पे कोई, that's why no, not from my father's side, which is more dominant in my family. Right. Yeah. So मेरी थोड़ी डिफरेंट स्टोरी थी इसमें। जब मैंने जॉब छोड़ी तो मेरे घर वाले बोल रहे क्या है, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कर रहे, कैसे हो रहा है ऐसे। तो मेरी फैमिली में अगर देखें, मेरे सब कजन्स डॉक्टर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है और जॉब कर रहे बाहर, वहाँ सऊदी, कनाडा, ऐसी जगहों पे। तो मुझे सडनली एक बारी मेरे को पापा, क्योंकि प्रॉफिट मतलब घर वाले एक्सपेक्ट करते हैं डे वन से ही प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, मतलब अब वैसा हो जाए, ऐसा हो जाए। अब मेरा फादर जो है वो थोड़ा वो बिजनेस बैकग्राउंड से, वो मेरे को फादर बोलने एक बारी बैठे हैं, वो बोल रहे कि एक कज़न डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया, तू क्या बन गया? गाड़ी वालों का एचओडी, प्रेसिडेंट बन गया गाड़ी वालों का। तो मैं कह रहा हूँ कि अब मैं कैसे समझाऊँ इनको कि क्या है क्या नहीं है। बट विद टाइम जब उन्होंने भी देखा जी, नो मतलब जब हम मेरे रिश्तेदार रिलेटिव्स ने बुक की, दोस्तों ने बुक की, उनके रिलेटिव्स ने बुक की, जब उनको रिलेटिव्स ने बोला तो उन्होंने बोला कि हाँ कि है कुछ तो है। फिर मतलब मेरे फादर जो इनिशियली कोई बोलता था कि क्या करता है, बोलते कैब चला हुआ, मतलब मैं अंदर से सोचा मैं कैब नहीं चलाता हूँ, बट अब उस टाइम पे मैं कुछ बोल नहीं सकता था। बट विद टाइम चीजें रेस्पेक्टेबल, बट देयर इज स्टिग्मा इन कश्मीर कि अगर कोई कैब चलाएगा तो नहीं। अभी और एक दूसरी भी चीज़ है ना, बिकॉज जनरेशन गैप है, तो उन्हें समझ नहीं आता कि इसकी टेक्निकलिटी क्या है। दे आर लाइक हाँ ये शायद कैब का ही है तो एक कैब चलाता है। देयर आर पीपल इन आवर सर्विस हु वर्क विद अ फुल टाइम जॉब इन अ कंपनी एंड दे ड्राइव एज वेल because of certain reasons. Maybe there's a financial problem, or maybe he just enjoys it. He doesn't want to stay put at home. So it's nothing bad to be a cab driver. बट सबसे इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो मैंने इसमें देखा, जैसे कि हमारी मेंटेलिटी है कैब ड्राइवर है ऐसे,
बट जो ही मतलब इंसान इनके साथ मिला, इनसे बात की, वहाँ पे ये पता चला कि ये हमसे भी अच्छे लोग हैं। मतलब ये आपके लिए, आप जो इनको बोलोगे ना, आपके लिए कुछ भी करें, मतलब इनके ये ऐसे ओपन हार्ट होते हैं, ये वेलकमिंग होते हैं हर किसी बहुत चीज़ में। ज्यादा। मतलब वहाँ पे पता, जैसे हम कोई ऑटो वाला है, हम सोचते हैं डरते हैं ये ऑटो वाला ही ऐसे, बट जब हम उससे मिलते हैं, उससे बात करते हैं, वो इतना वेलकमिंग होता है। मतलब अगर मान लो हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको चाय वाय, वो आपको पूरा चिकन विकन खिला के भेजेगा। मतलब वो ऐसे वेलकम, मैं सच कह रहा हूँ, हाँ। ऐसे वेलकमिंग होते हैं कि मतलब इंसान बोलता है कि भाई ये तो हमसे भी अच्छा है। बट हमारी जो कम्युनिटी की वो मेंटेलिटी बन चुकी है कि ये ऐसे, वो सब चीज़ें। हम जैसे ऑफिस में बैठे होते हैं, हमारे पास जो हमारे नोवो के पार्टनर्स है, कैब पार्टनर, तो वो क्या करते हैं, वो ऑफिस में आते हैं, वो खुद ही चाय बनाते हैं, खुद ही बैठते, मतलब ऐसा लगता है कि फैमिली है। फैमिली टाइप। ऐसा नहीं है कि हम अलग है वो अलग है, तो फैमिली टाइप फील होता है वहाँ पे। और वैसे इंसान को मज़ा भी आता है काम करने में। हमने ना जो मतलब पहली बार जब मैंने नोवो कैब किया था, मैंने अपने लिए नहीं किया था, मेरे पेरेंट्स को जाना था कहीं, तो मैंने उनको कहा था कि ये मैं करके देता हूँ। अच्छा। ठीक है, तो लोकेशन मुझे भी खुद उस वक्त, और ऐप भी उतनी एडवांस मतलब नहीं जितनी थी, अभी थोड़े उस वक्त bugs पे होंगे। काफ़ी, हाँ बहुत बग्स थे उस टाइम पे, वो मैप वगैरह क्लियर नहीं थे। तो मैंने रैंडमली यहाँ पे लोकेशन डाल दी थी, मतलब स्पेसिफिक मैं नहीं गया। अच्छा। तो फिर वो गए, कैब आई कुछ 10 मिनट में आई, तो वो गए वहाँ से आते, फिर उन्होंने कहा कि मतलब जो ड्राइवर थे वो इतने कोऑपरेटिव थे कि वो लोकेशन सही थी भी नहीं, हाँ, उसने बट कर स्टिल वो दिया ड्रॉप। गलियों वलियों में जाके एट दी एंड उसने बराबर ड्रॉप हमें कर छोड़ा जहाँ पे हमें जाना था। एंड लेकिन चार्ज उतना ही किया जितना ऐप पे दिखा रहा था। दिया। अच्छा। सो ओके। यू नो दैट इज द थिंग बिल्कुल। अबाउट कि जो मतलब जो हम परसीव करते हैं कि अच्छा पता नहीं सेफ होगा नहीं होगा, तो वहाँ से मुझे लगा कि नहीं ये तो दिस इज नहीं, they मच get a गुड। formal training before starting, a couple of They days. do? हाँ, they do. They get What is demo that? rights. तो first we make them understand the whole operations and finance का procedure कितना क्या है. उसके बाद they get a technical overview of कि कैसे app use करनी है. Okay. And then they get demo rights from our different employees in Srinagar कि यहाँ से उठाने वहाँ पे drop करना. So once he gets an experience कि ऐसे चलना है, तो he starts remembering and reminding things कि हाँ ठीक है, अब मेरे को ये करना है, अब ये करना है. तो he knows के, तो we also train them about certain questions that the customers might ask or the problems that he might face. कि अगर ये केस हुआ तो ये करना, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करना. एक बार ऐसा हुआ था कि एक बांडीपोरा के ड्राइवर थे, तो वो श्रीनगर में ज़्यादा होते नहीं थे ऑब्वियसली, तो उनको लग रहा था कि मतलब थोड़ा वो स्ट्रिक्टली चल रहे थे कि अब कैब सर्विस में चलना है. तो ही सम कस्टमर बुक्ड अ कैब बाय द नेम ऑफ मिस्टर साबर, आई गेस कुछ ऐसे. तो ही वेंट देयर और वहाँ से एक लेडी आ गई और वो गाड़ी में बैठ गई. तो उनको बोल रहा है कि मिस्टर सर्वर कहाँ है. तो बोल रहा है कि नहीं नहीं, मेरे को, वो लेडी ने बताया कि मेरे को यूनिवर्सिटी जल्दी पहुंचना है. तो उन्हें फिर हमें कॉल किया, "इशुन माना नहीं है, इशुन मिस्टर सावर खरीन गाड़ी में शियाकुट, लेकिन मिस्टर सावर." तो वो फॉर्मल ट्रेनिंग फिर हमें लगा कि नहीं, इट्स इम्पोर्टेंट कि ये फॉर्मल ट्रेनिंग देनी है, नहीं तो फिर उन्हें बताया मिस्टर खानदार से इतनी यूनिवर्सिटी. तो इसलिए ट्रेनिंग ज़रूरी थी to make them understand of different situations they might face during working for no. So yeah. Right, and I noticed one more thing that जो भी drivers है ना, वो they are often like मतलब most of them are plus 30, like 30 above है सब. Yeah. There are no young people. So like कोई filter आप लगाते हैं क्या, हम किन के साथ partner करने वाले हैं? नहीं, I How does believe that a work? lot of young generation right now, because of the strict protocol of not getting license Okay. that easily. Okay. A lot of them don't have licenses available. That's one, the first point. The second one is जो above 30 जो हमारी generation है यहाँ पे, they're mostly be invested in businesses in Kashmir arts or some other. तो because the Kashmir arts business has been hit outside Kashmir or even in here, so they've come back and they're doing this. So the young generation, they're moving more towards IT, and whatever degree they do, they pursue their career in that only. Okay. Yeah. Fair enough. And how many employees are there right now? Apart, Including like all. not the cab partners, just the people Our, in the our, our operations. team is small. We have operations and tech added. It's about 10 to 11 people right Okay. now. Yeah. All are based in Srinagar, yeah. No, they're spread out. Operations is based in Srinagar. Srinagar, the yeah. thing that he handles. Okay. So the developers work remotely. Yeah. Some of them are from Srinagar and some are They were from remote. outside this state, like from Bangalore, Pune. And what was the hiring process? कहाँ पे आपने reach out किया? I would usually use LinkedIn as my medium, but since I worked in tech for the last 7 years, so I have an idea कि when you talk to a guy, what he's capable of and stuff. So hiring filter, there's no filter, but it's just we have a guy. He's just 19 years old.
Oh. and he's doing all of them like the major work, Mm-hmm. and he earns pretty handsomely for a 19-year-old. Mm-hmm. So yeah, so hiring, I've mostly chosen LinkedIn and some referrals, but I think LinkedIn has been the most useful resource for now. That is one of the most helpful social media platforms ever. Yeah. Like, Yeah, people are connected on their profile. You know, there are Exactly. other platforms, Naukri, Hirist, वगैरह. Hmm. But I don't think people are active on it. You know, people are conscious about their LinkedIn presence. You know? Hmm. So that's why I think LinkedIn is a better medium. I don't think here in Kashmir we are very familiar with LinkedIn yet. Now they've started, you know, in MBA and BBA, or Kashmir University and others, they Hmm. give you a task of setting up your LinkedIn Hmm. profile that has a certain amount of marks. So I think, yeah, now people have started to. हमारे टाइम पे तो नहीं. Like in my own business, I give all of the credit to LinkedIn. It helped me find like great people. Yeah. तो That's जो right. भी हमारे ऑपरेशंस मैनेजर एंड ऑल्सो दे ज्वाइंड एज एंट्री लेवल पीपल लाइक डेटा एंट्री में कोई कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव देन दे वो रहे हमारे साथ 6 महीने 8 महीने टिल दे गॉट प्रमोटेड टू Okay. ऑपरेशंस मैनेजर एंड Nice. बट पोस्ट पे सो या That's great. like I really, you know, I urge people to start using LinkedIn, especially people in Kashmir. Yeah. It's They should be very active on LinkedIn. Yeah, करना क्या LinkedIn पे है? भी a lot of people post certain random stuff. हाँ, I also post random stuff there. No, random stuff as in they'll post something, you know, what would be usually on Facebook. Yeah. अब तो like लोग तो वही है जो उनको अब LinkedIn को भी Facebook ही बनाना पड़ेगा. Yeah, there's a moderator police, no? Normal Right. people who will tell them, yeah, LinkedIn के लिए नहीं है. Right. So, yeah. There are custodians of LinkedIn Yeah, there. exactly. Anyway, so going back to the question जो मैंने आपको स्टार्ट में पूछा था कि आपकी फैमिलीज का कैसा रहा Mm. एंड यू सेट कि यू नो तो वहाँ पे ना मुझे एक और लेकिन मतलब मुझे एक इंसाइट खुद भी आ रही है बिकॉज आई रिमेंबर दिस यूज टू बी द केस इनिशियली जब मैंने तो आपने तो फिर भी यू हैव कम्प्लीटेड योर कॉलेजेस यू हैव यू नो बिन टू अ जॉब मैंने कॉलेज बीच में छोड़ दिया था अच्छा तो हमें कॉलेज ड्रॉप आउट तो Hmm. काफ़ी टाइम तक यू नो एक तो समझाना भी मुश्किल है कि मैं क्या कर रहा हूँ Right. माई पेरेंट्स यूज टू बी कन्फ्यूज मेरी फैमिली बड़ी कन्फ्यूज रहती कि क्या करता है और आज भी उनको कोई पूछेगा क्या करता है दे डोंट हैव अ क्लियर आंसर क्या Just करता 12th pass. That's what they say. है these 12 even though they I wouldn't also say dropped it. out from my first degree. Okay. Yeah, but then I had to do it for my parents. Yeah. Then I said कि Same. नहीं भाई ये नहीं मानेंगे. मैं तो भी कुछ टाइम पहले तक मेरे फादर पूछते रहते थे कि कॉलेज मत गए थे वहाँ पर मैं लाइक हाँ देख हाँ लेंगे। कश्मीर में ये स्टिग्मा है ना कि इज 12th पास दैट हाँ। डजंट मैटर बाहर के बहुत सारे द डेवलपर्स दैट वी हैव द सीनियर वन ही इज जस्ट पास्ड हिज 12th and he's doing a degree from IGNOU right now but he's not totally vested in it he's doing it again for his parents although I don't urge people to not you know complete a degree but you know if their parents ask them to but yeah it's not the only important thing in your life राइट कंसिस्टेंसी जरूरी है कोई भी चीज इंसान करे उसमें मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी काफी ज्यादा जरूरी है yeah if you have passion for something you अगर pursue किसी it चीज का anyway. पैशन है ऐसा नहीं है कि मतलब अब हम बोलेंगे कि हम अगर हमारा पैशन किसी चीज में हम अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर सकते मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है अगर इंसान चाहे वो स्टडीज भी कंप्लीट कर सकता है और अपने पैशन को भी फॉलो कर सकता है Although it's तो not important ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मतलब हर किसी के अपनी डिसीजंस होते हैं अपने ये होते हैं तो अब अगर वो कोई चीज़ कर रहा है तो उसमें कंसिस्टेंसी मेरे ख्याल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है I think we as Right. Kashmiris should you know stop worrying about someone not doing a degree because he's pursuing some because passion. yeah, because I'll tell you why like for you I'll tell कि मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि why it should have stopped bothering you कि आपके पेरेंट्स अगर आपको कह रहे हैं कि why are you not या why are you doing this business या आपने जॉब क्यों छोड़ी तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप मुझे बताइएगा मैं सही सोच रहा हूँ कि नहीं so I have met people अभी like when we are outside of Kashmir in Delhi और elsewhere हम कैब बुक करते हैं the people मतलब जो कैब ड्राइवर्स होते हैं I hardly find them, you know, representing their company. Say, for example, if I'm booking an XYZ cab, they will always be like, सर है ना पेमेंट है ना वहाँ पे मत कर देना मुझे ये पे देना है वो कंपनी फिर देती नहीं है हमें या नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा कंपनी का अभी हमें मतलब हम वहाँ से नहीं जा so they are always cribbing about something about Right, their yeah. company but what I found here was they are representing the company like the cab drivers here in Kashmir they are representing Novo I felt that why did I feel that कुछ दिन पहले ही अभी आपकी ऐप में कोई प्रॉब्लम था ठीक है तो मैं 10 मिनट तक कर रहा हूँ कोशिश तो फाइनली जब बुक हुआ देन ही केम एंड ही सेड आप शायद काफ़ी टाइम से कर रहे थे बुक क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी लेकिन ऐप में कुछ प्रॉब्लम है मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था ठीक है मैंने कहा हाँ यही होगा
देन ही क्विकली सेड कि नहीं लेकिन वो फिक्स कर रहे हैं, वो कर देंगे फिक्स, तो अभी तो स्टार्टिंग, मतलब उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया कुछ और बोलने का, उन्होंने खुद ही डिफेंड किया। या अगेन अभी थोड़ी देर पहले आई वाज टेलिंग यू अबाउट दैट इंसिडेंट कि कुछ वीक्स पहले आई वाज इन अ कैब एंड कुछ 3-4 उस वक्त बजे थे, मतलब दोपहरी थी, एंड ही सेड अभी मैं अपने घर जा रहा हूँ, मेरा आज का दिन हो गया, मैंने सुबह से 2000 रुपये कमा लिए, एंड 3 बजे थे उस वक्त, और 3 बजे ही वॉज गोइंग होम, ही सेड कि मैंने आज का काम कर लिया और मैं महीने का 60-70 हज़ार में कमा लेता हूँ, एंड ही एक्चुअली दीज वर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, ही वाज लाइक ये मेरी दुकान जैसी है, मैं जब चाहे शटर खोल देता हूँ तब चाहे सो मतलब व्हेन यू नो इट कि दीज मतलब इतने सारे लोग आप पे भी रिलाई कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग गुड लाइवलीहुड आउट ऑफ दैट, so I don't think कि फिर आपको बॉदर करेगा अगर if someone is telling you why you did that, because you know what value you are creating in the society or in general, right? That's true. So how does that make you feel when you listen to such incidents? इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मतलब अभी अगर कोई इंसान काम कर रहा है तो सेटिस्फिकेशन मिल रहा, क्योंकि वो चीज़ आपको बूस्ट करती है कि आप और करो। तो अभी अगर आप देखोगे हमारे साथ मोर देन 200 ड्राइवर्स है, वो कनेक्टेड है, वो हमारे साथ काम करते हैं। तो अगर हम 200 ड्राइवरों से मिले, 200 ड्राइवरों से बात करें, वो हर कोई दुआ देता है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि मतलब अंदर से इंसान को सेटिस्फिकेशन मिलती है, वो सोचो दुआ खर करा होता है, बहुत अच्छा है वो, ये हमें घर चल रहा है ऐसे। अब अगर आप देखोगे कि कस्टमर्स क्योंकि कस्टमर्स भी है, वहाँ से वो दुआ देते, बोलते हैं कि काफ़ी अच्छा हुआ, काफ़ी ये हमें बहुत आराम हुआ ऐसे, हमें काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता था, वेट करना पड़ता था कि हमारे ब्रदर कब आएंगे, हमारे अंकल कब आएंगे या फादर कब आएंगे, हमें ड्रॉप करेंगे। ज़्यादातर फीमेल कस्टमर्स जो है वो काफ़ी दुआ देती है कि काफ़ी सेफ है, क्योंकि अगर आप किसी फीमेल कस्टमर को कोई फ़ोन भूल गया कैब में, तो उसको पता है मेरी ये गाड़ी थी, ड्राइवर का नंबर ये था, वो सेम टाइम पे रियल टाइम पे ड्राइवर को कॉल करके उससे फ़ोन वापस मांगते हैं। तो बाकी तो ये एक फैमिली जैसा बन गया यहाँ पे, क्योंकि सिटी है, छोटी सिटी है, मतलब ड्राइवर हमारे पास आते हैं, हम ड्राइवर से मिलते हैं, हम रियल टाइम कोशिश करते हैं कस्टमर प्लस ड्राइवर की प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो उससे एक बॉन्ड बन गया ड्राइवर और हमारे बीच के। ड्राइवर जो है वो हमें प्रमोट करते, बोलते हैं कि ये चलना चाहिए, वो दिल से चाहते हैं ये चलना चाहिए, सब चीज़ें छोड़ के, क्योंकि यहाँ से अगर कोई कश्मीर हैंडीक्राफ्ट वाला जो है यहाँ से दिल्ली जाता है तो अपने घर से भी दूर है, फिर वहाँ पे दिल्ली में जाकर क्या पता काम हो ना हो इन्वेस्टमेंट करने, यहाँ पे उसको पता है कि मैं दिन का 1500 से 2000 कमा लूँगा तो मेरा घर चलेगा। तो इस चीज़ से जो है इंसान और ज़्यादा मोटिवेट होता है, और ज़्यादा मतलब जो फैमिली चीज़ें हैं वो थोड़ा इंसान करता है फिर नेगलेक्ट, कि घर वाले अगर ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं, तो वो चीज़ भी हो जाती है फिर। Also, when you said कि the drivers जो ओला उबर के हैं, they crib about, you know, their cab service. बीफ कर देंगे हम, ये आपने नाम लिया उनका। हाँ कोई obviously. तो I guess there are 3 major reasons. You know, a lot of people say कि already ओला उबर है, what are you gonna do? You know, about this when you go to the outside states. तो cab booking, because they compare it to a delivery model like Swiggy or the other giants, but it's not. It's very complex. There are a lot of hidden to do's and to not do's in the cab business. And since we have figured it out in the last 2 years, you know, what are these companies doing wrong? Why are people, you know, why are the drivers not happy with their customer service? Is it because of the extra commission that they charge them? Is it because of holding up their payments? Is it about not being transparent with the drivers? We have figured out those, you know, corners of this whole ecosystem, and we're trying to work on that. That will be a differentiator when we move outside Srinagar. Not yet, but in order to be ready for that, we're, you know, gearing up for the next 6 months. You do plan to move outside of Srinagar as well? Yeah, we're actually currently planning to go to launch in Kolkata right now. Okay. Yeah, so we'll be starting by the 1st of probably 1st or 10th of November. Yeah. Any reason why Kolkata? Kolkata has the association in Kolkata, Taxi Union Association, it's been broken up into parts because of someone using a particular service, someone using a particular service, and someone favoring a totally new service. So it is easy to penetrate into that market. Yeah, that's why. And we have connections in Kolkata already with the Taxi Union presidency and stuff, and we'll be able to easily penetrate because of low commission rates with Novo. A lot of companies go for third-party software every time they want to, because they already have funding, right? They would be like, ठीक है, ये software service भी लेते हैं, ये service भी लेते हैं. We mostly choose open source softwares which are built in-house, and there are, you know, advancements done inside
the company. By your own developers. Yeah. Okay. So that actually helps us to scale with a bootstrap model. Although we don't, we'll be probably taking up some funding soon. But yeah, You haven't like अभी तक भी you haven't. no, we haven't raised- approached, no, not a funder yet. Okay, so what is the business model? क्योंकि देखो होता है मैं अभी यहाँ पे अभी कैब बुक कर रहा हूँ, वो मेरे को मेरे घर पे छोड़ देगी and I'll pay them कैश या मैं उनको गूगल पे कर दूंगा. How is the company making profit out of it? It's mostly due to commissions that we charge them, which is very minimal compared to the other companies. So that's the main source of income that we make right now. So आगे जाके we'll be having promotions, I guess. You know, promoting other businesses and having collaborations with them. That might be another source of income. Promoting as in? Promoting as in if we have a daily user base of active users about 2000, 2500, which equals to 60, 70K per month. And these are users who actually focus on the application. They don't just go through reels. So we might advertise them. On ads your and stuff. app? Yeah. Or? We might have some collaborations with them on the basis of offers soon. Yeah. But with local vendors, not with the outside companies yet. So on a normal working day, how many rides do happen 400 to 500 rides. every day? Yeah. That's brilliant. I think that's still very less compared to the population and what could be the reach in Srinagar. But like अब अच्छा वो rides comparative मैं compare कर रहा हूँ फिर. Yeah. Yeah. And you started in when 2020 like 2021. That was 2021 peak lockdown. Yeah, exactly. January. Yeah. Customer support. Do you have a customer support team अपने setup Right की now, है या? yeah. Previously, we used to handle customer support ourselves. So this incident happened with me. It was in the early days of when we started. So अभी we have around 3 लोग हैं who handle customer support. Yeah. So mainly customer support जो है वो मैं देखता हूँ कि दिन में क्या problems आते हैं, क्या issue आते हैं. So customer support का क्या है, हमें जो customer है जब वो ride end करता है तो वो ratings देता है और वो वहाँ पे comment भी डाल सकता है कि अगर driver ने rude behave किया, कोई issue customer ने कोई issue face किया तो हम real time वो issue solve करते हैं. क्योंकि customer और हमारा जो contact number है, helpline number है वो भी real time call कर सकते हैं उस पर और हम real time solve कर देते हैं issue. So if in case कोई customer किसी का जो है phone गाड़ी में भूल गया या किसी कस्टमर ने जो है ड्राइवर के साथ कोई कन्वर्सेशन की और उसको लगा कि ड्राइवर ने कुछ गलत बात बोली या कुछ वो बोला सेफ नहीं है सो वो रियल टाइम कंप्लेन कर सकते हैं उस पर कमेंट डाल के और हमें कॉल भी कर सकते हैं. हम रियल टाइम उस ड्राइवर को फिर या तो अगर कोई नॉमिनल सी चीज़ हो जो इग्नोर कर सकते हैं या ड्राइवर को समझा सकते हैं तो हम वो करते हैं कि ड्राइवर को समझा सकते हैं कि जी ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है. क्योंकि जब कोई नया ड्राइवर है इनिशियली हो सकता है कि उससे कोई गलती हो तो हम उसको समझा देते हैं तो फिर वो नेक्स्ट टाइम वो नहीं करता. फिर इफ इन केस कि कोई ऐसा इशू है कि जो नेगलेक्ट नहीं कर सकते तो हम उस ड्राइवर को निकाल देते हैं, उसको एलिमिनेट कर देते हैं. तो हम उसके साथ कंटिन्यू नहीं करते. मतलब ये हमेशा मतलब वो 24/7 में कह सकता हूँ क्या मतलब जब तक कैब ऑपरेशन जब तक सर्विस अवेलेबल होती है तब customer तक support available होता है. बिल्कुल. तो हाँ मैं पूछ रहा था कि तो ज़्यादातर अगर आप कस्टमर सपोर्ट आप देख रहे हैं तो ज़्यादातर क्या आपके पास क्वेरीज आती हैं? सो अगर देखें ज़्यादातर कस्टमर्स की जो क्वेरीज है वो ये होती है कि ड्राइवर ने जो है रूट चेंज किया, ड्राइवर दूसरे रूट से गया क्योंकि किसी रूट से जो है ट्रैफिक ज़्यादा होता है किसी टाइम पे तो उसको कस्टमर कहता है कि मुझे जल्दी से पहुंचा दो. सो ड्राइवर जो है वो दूसरा रूट को ही लेता है तो उसकी वजह से उसके फेयर में जो है वो थोड़ा रेज हो जाता है फेयर. वो 250 फॉर एग्जांपल पहले दिखाता फिर उसके बाद 280 दिखा रहा है क्योंकि 1-2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला. या तो ये हो सकता है या तो ऐसा होता है कि किसी टाइम क्या होता है जो ड्राइवर की जो गाड़ी है वो साफ़ नहीं होती है तो वो कस्टमर क्योंकि कस्टमर्स भी जो अभी पहले इनिशियली चलता था बट अभी जो कस्टमर्स है वो भी चाहते हैं कि ये अच्छे से रहे, ये चले, ये सर्विस जो है ये चले. हाँ तो अगर कोई ड्राइवर है उसकी गाड़ी मेंटेन नहीं तो वो कंप्लेन करते हैं कि ड्राइवर ने गाड़ी साफ़ नहीं रखी थी, ड्राइवर ने मतलब गाड़ी में गंद था. या तो हम रियल टाइम जो है ड्राइवर को कॉल करके बोलते हैं कि ये सब चीज़ें दोबारा आपकी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए. तो वो सब कंप्लेंट्स हमें आती है. अभी आपके जो आप सोशल मीडिया पे आप कुछ पोस्ट करते रहते हैं तो मैं रिसेंटली देखा था, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो उसमें एक तो ने वो भी कहा था कि जो आपने भी कहा कि फेयर जो चेंज हो जाता है कि हमने जब बुक किया था तो कुछ और फेयर दिखा रहा था, जब हम एंड हुई राइड तो कुछ और फेयर दिखा रहा था. So उसका usually we usually get that query. You'll see it on the Play Store. You'll see it on every post that we make. You'll see it in our DMs.
the there are 3-4 reasons for that. One of the reasons that I've known is that a lot of people, since are not known to the cab service yet, they'll pick a point in Jawaharnagar. They'll type Jawaharnagar. They'll select Jawaharnagar. Right. They're going from Sovra to Jawaharnagar. Jawaharnagar is according to us, is the center of Jawaharnagar, right? But he wants to be dropped at the end of Jawaharnagar, let's say, towards the end of it, towards Majur Nagar or somewhere. हाँ. Or sometimes क्या होता है कि he does not enter the exact point of the location, तो वो बोलता है कि नहीं मुझे आगे उतरना है, यहाँ पे नहीं उतरना. तो जब वो आगे जाता है, obviously we have to cater to the driver as well कि अगर वो आगे चला तो you'll have to be paid extra. So that is the most normal case that we've seen when we examined the route map. The second problem that we have seen is drivers taking sometimes the longer route because of it being fast. So I guess sometimes the customers complain. Kaise? So we confirm from the customers if customer suggested it to take the longer route and make him reach his destination fast. If that's not the case, then the driver has to take the shortest route. In that case, there's a refund applicable. They can DM us on Instagram. They can call the customer support or even on WhatsApp, and we'll be able to provide them. We have already provided like more than 20,000 rupees of refund even in the last year. Although we're expecting it to go lower day by day. So that is the most common complaint, and that is the reason people do it. Because of not knowing the exact location that they want to be dropped. So I guess this is something that will be inculcated in the audience, and how this is one of the ideas was how to prevent this is that अगर आप सोवरा से जवाहरनगर डाल रहे हो, so we'll only charge you for that. Will not charge extra, but the driver will drop you there. He'll not even go like 10 meters or 50 meters ahead, and that's something people are not ready for. Right. We don't also want to cause any kind of inconvenience for people. So that's why we had to reach a middle ground कि जहाँ पे ये भी हो जाए, ये भी हो जाए. We said okay, if the customer complains, we'll provide a refund. That's okay. So that is the most common complaint. That will be an extreme step कि आपने यहाँ रखा तो यहीं पे छोड़ देंगे. Yeah, that is what the drivers in Bangalore, in Delhi, in any city you go, they'll not go past the point. They'll be banned for that. Right. So that is why I want the people to know that's the problem. I urge them to whenever they put a destination to make it as close as possible to their destination, actual destination as possible, and they will not see a fluctuation. Yeah. अभी तक I'm assuming that जो भी अभी तक Novo Cabs कितनी growth हुई, you are saying around 400 drives every day. तो आप like what has been the major source of customer acquisition आपकी कहाँ से, मतलब मैं assume कर रहा हूँ शायद word of mouth सबसे ज़्यादा हो रहा है आपका. Yeah. But apart from that, what are the steps you have taken to market your brand? So initially जो है हमारा सारा word of mouth से ही था, सब कुछ एक ने दूसरे को, मार्केट की नीड भी थी क्योंकि ऐसी कोई सर्विस नहीं थी जो ट्रांसपोर्ट लोगों को प्रोवाइड कर सके. तो ज़्यादातर जो हमारा मार्केट है वो यही माउथ टू माउथ ही स्प्रेड हुआ. माउथ टू माउथ मार्केटिंग हो गई, और ड्राइवर्स जो है, ड्राइवर्स ने भी काफ़ी मार्केटिंग की क्योंकि उनका रोज़गार चलता था इससे. तो वो भी सबको बोलते थे कि ऐसे कैब सर्विस है, ऐसे ये. तो हम इंस्टाग्राम पे भी अगर पोस्ट चढ़ाते थे, अपना अपलोड करते, तो ड्राइवर को क्या चट्टी है, उसको अपने काम से कम, बट वो पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेके अपने प्रोफाइल में अपडेट करता है कि ऐसे नोवो कैब्स है, ऐसे ये सर्विस है, तो ये चल रही है यहाँ पे. तो इनिशियली यही सब स्टेप्स हमने जो है यही चीज़ें हुई. We did a little bit of digital marketing. We made ads, video ads for our audience, but I think we stopped doing that for a while because we found a few bugs in the app and we wanted to make it stable first, and then, but as Fahim said, word of mouth, most of it is out. So we see about 100 new customers every day on the panel, and it's all from like word of mouth. यहाँ पे ना व्यूअर्स के लिए भी काफ़ी एक अच्छा सा लेसन है कि दो तरह की हमारी मार्केटिंग होती है. एक होता है पुश मार्केटिंग, ये होता है पुल मार्केटिंग. पुश मार्केटिंग यूजुअली आपको तब करनी पड़ती है जब आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट अगर वो कस्टमर यूज़ ना भी करे तो चलेगा, तो आपको क्या उसको पुश करना पड़ता है कि ले लो भाई. दूसरा होता है पुल, कि कस्टमर उसको जैसे ही पता चलता है ऐसा कुछ है वो खुद ही आएगा लेने. तो जब आप कुछ ऐसा दे रहे हो जिसकी एक्चुअल में मार्केट को जरूरत है, तो आपको पुश नहीं करना पड़ेगा, आपको पुल मार्केटिंग हो जाएगी, लोग वहीं से आ जाएंगे आपके पास. सो नो दैट्स वन थिंग. इफ यू आर like if any of our viewers is trying to start up, they should keep that in mind. कुछ ऐसा value create करे वो, right? Anyway, moving on to the next segment, we'll talk more about not the business but of the founders. Okay, so
जैसा कि अभी हमें पता है इट्स संडे टुडे, बट स्टिल अभी आपकी एक मीटिंग से आप आ रहे हैं, अभी आप यहाँ पे, अभी आपको और एक मीटिंग के लिए जाना है, तो आई डोंट थिंक कि संडेज का कॉन्सेप्ट अभी है फाउंड. नहीं, I guess it exists with all entrepreneurs, I guess. एग्जैक्टली, इट हैपेंस विद ऑल फाउंडर्स. लाइक Yeah. आई डोंट नो लास्ट टाइम मैंने कब कहा था हाँ संडे आज चलो अच्छा है. सो इट्स And I ऑल guess घर में बैठ के भी मज़ा नहीं आता. ऑब्वियसली फिर आदत हो जाती है एक पॉइंट के बाद. So how has it affected your social life, like being in a startup? How does it affect your social life as a founder? Do you lose friends, or Yeah. have you lost friends because of this? क्या है कि मेरे साथ थोड़ा सा ऐसे हो, क्योंकि माजिद जो है ये बेंगलोर में होते हैं कुछ टाइम यहाँ होते हैं, तो मैं पूरा सुबह से शाम तक ऑफिस में रहता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऑफिस नहीं पहुँचूंगा जो काम करते हैं वो भी इंटरेस्टेड नहीं रहते काम करने में. वो देखते हैं कि ये अभी नहीं आया है, तो वो वहाँ पे ऑफिस में बैठ के ना, मतलब कर ऐसा नहीं कि काम नहीं करते, बट वो उनमें वो एनर्जी नहीं रहती है. फिर जब वो देखते हैं कि जो फाउंडर है वही गायब है, वही इंटरेस्टेड नहीं है काम में, तो वो उनका भी इंटरेस्ट उससे कम हो जाता है. तो फ्रेंड्स, हाँ ऑब्वियसली, जैसे नोवो से पहले हर हफ्ते घूमने जाना होता था, हर हफ्ते दोस्तों से मिलना होता था, वो कम हो गया. ऐसा नहीं कि दोस्तों के साथ कट ऑफ हो गया, बट वो चीज़ कम हो गई ऑब्वियसली, क्योंकि अभी जैसे संडे वो फ्री होते हैं, तो मैं संडे भी किसी काम में होता हूँ, या वो किसी वीकेंड्स पे बोलते हैं चलो यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, तो वीकेंड्स पे भी काम होते हैं. तो ऑब्वियसली हाँ वैसा तो है, फ्रेंडशिप थोड़ा बॉन्ड हो गई इन चीज़ों की वजह से. एंड फैमिलीज वगैरह में, फैमिलीज का वैसा नहीं, बिकॉज़ यू कैन लाइक हम उतना टाइम नहीं दे पाते हैं एज मच एज वी शुड. नहीं ऐसा कुछ नहीं. मेरे को लगता है अभी ज़्यादा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, क्योंकि पहले तो बाहर होता था काम करता, तो फैमिली को 3-4 महीने बाद जब जाते 5 दिन 6 दिन, अभी तो हर दिन शाम को घर ही जाना होता था, तो घर पे शाम को बैठते, सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट एक साथ होता है. तो ऐसा मेरा कोई फैमिली के साथ ऐसे इफेक्ट नहीं हुआ कि फैमिली से दूर जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं. So there are kind of people, you know, the kind of people who would start something. Some people are very organized. They would be available for everything, their business, their families. Some people are not. They get vested in their passion too much, they forget people. And the later one. Yeah. They'll make new friends, they'll forget old ones, the old ones will forget them. But somehow, you know, I guess it depends on the kind of person you are. What kind of person are you? I am yet to figure it out. I think I try my best, but sometimes, you know, a lot of people, a lot of friends and close ones complain, you know, you're not being available because of this, you're not being available because of that. But I think you have to make some compromises if you're trying to work towards something. You'll have to make some compromises where you think, you know, they're necessary, or you know, it wouldn't matter much. But you need to keep your close ones close. I think that's important. That's something I've learned in the last year. Right. And मेरा है ना ये भी, I believe that if people, मतलब जो actual में the people who are worth being in your life, they'll understand your struggle. somehow. अभी अगर आप अपने struggle phase में हो, they will understand that. Exactly. But I think if they are maybe, जैसे I said कि like we lose friendships and everything, I think those people are maybe they were not meant to be in your life and to That's begin true. with. Because That's if they are true. not, you know, if they are not with you when you are struggling, maybe they don't deserve you when you have, you know, achieved your success. I guess that's true. That actually hit me right now, but yeah, that's true. So Right. yeah, that's true. Yeah. सो ओके, इसी में एक और मैं ये ऐड करता हूँ. व्हाट डू यू थिंक अबाउट, लाइक मेरा पर्सनली एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि वट एवर यू डू इन योर लाइफ, आप अच्छा करते हो बुरा करते हो, उसका डायरेक्ट कनेक्शन है व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर स्पेंडिंग योर टाइम विद. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? लाइक डू यू बिलीव कि हमें क्वालिटी पीपल को, वी शुड सराउंड आवरसेल्व्स विद द क्वालिटी पीपल, द पीपल हु आर एम्बिशियस, who you know who make you a better person, or do you think no, we can maybe hang out with all kinds of people? What do you think about that? Yeah, I believe. Do you want to answer this? मेरा सच ये है कि हाँ, इससे इम्पैक्ट पड़ता है कि हम अगर जैसे इंसान के साथ हो वैसे ही बन जाते हैं. तो मेरी यही कोशिश रही है हमेशा से, अगर मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, या पहले मेरा फ्रेंड सर्कल काफ़ी छोटा है, मैं ज़्यादा फ्रेंड सर्कल अपना बढ़ाता नहीं हूँ. क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. जी बिल्कुल. तो फ्रेंड सर्कल छोटा है, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ काम है, उनको मुझसे मिलना होता है तो ऑफिस में ही आते हैं, तो कुछ खाना पीना होता है ऑफिस में ही मंगाते हैं, वहीं खाते हैं, तो वैसा है. अब हाँ, ऐसा भी है कुछ दोस्त ऐसे ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनकी मतलब आपको आप उनके साथ जाते हो तो आप उनके जैसे बन जाते हो, क्योंकि आपको वो चीज़ें पसंद आने लगती है, या ऐसा कुछ है.
तो मुझे नहीं लगता है कि उससे वहाँ भी I guess दो kind of people है in this circle है ना, right? There are people who have a very large circle of friends, but they are only close to the the people they trust, and they don't take habits from others easily. And the others, even though they have a close knit circle, but they easy. That's why they limit their circle, because they know कि भाई नहीं, I usually attract this. और And I मेरे में absorb a वो lot of it. प्रॉब्लम है, मैं Yes, human जल्दी से हमारे- किसी से मतलब किसी के साथ भी हो जाऊंगा, मैं उसी के जैसा हो So he जाता हूँ, तो keeps a मेरे close circle. I so have a मैंने- wide circle because I know where to limit myself. Right. Maybe he doesn't, so he keeps it close. Yeah, I keep it close. नहीं आई बिकॉज मतलब एज इंसान हमारी फितरत ही है कि लाइक हम बचपन में बोलना तक सीखते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द उनसे बोलना चलना हम उनसे Right. सीखते हैं. तो आई थिंक ये एज ए ह्यूमन टेंडेंसी हम में कि आप जिस मतलब वी आर लाइक वाटर, इस ग्लास में डाल दो तो ग्लास की शेप, बॉटल में डाल दो तो बॉटल की शेप आ Highly जाएगी. adaptable. आई स्ट्रांगली बिलीव दैट. और विद टाइम इंसान को खुद भी समझ आ जाता है. मतलब अगर कोई दोस्त है, इंसान उसके साथ रहता है, तो विद टाइम इंसान को अंदर से फीलिंग आती है, भाई ये मेरे लिए केयर करता है. मतलब वो अंदर से, मतलब वो दिल से आती है वो बात. तो विद टाइम वो चीज़ें हो जाती है. आप जो ऐसी फॉर्मली आपके साथ फ्रेंडशिप रख रहा है, वो भी पता चल जाती है. तो आई थिंक ऐसा भी है. बोर हो रहे हैं क्या आप? नहीं, I just am naturally very restless. ये वाला कट नहीं होगा मिस मेरे को. तो हाउ आर यू लाइक, अभी तो एक चीज़ है कि यू टोल्ड मी दैट कंपनी इज नॉट येट प्रॉफिटेबल. सो लाइक डू यू टेक सैलरीज फ्रॉम योर कंपनी येट और? No, that's why we have a full-time job. Okay. Yeah. So apart from Novo. Yeah. Okay. So, no, the aim of Novo was not to make it profitable right away. The aim was to make it sustainable first, without having a funding model. Because I've seen कि funding model में everybody can get a funding. Companies that have a very niche audience, they'll get a funding, and they'll then after 2-3 years go bankrupt. Right. So the idea was to create something that will not go bankrupt. Like you've seen the giant in the cab service giant in India. Even they were not profitable before they started. I don't think they still are. Their CEO says were highly profitable. They're not. No, they're not. I don't. And now they've started their manufacturing business. Now they're profitable. Okay. Because the cab service, it again goes back to the same thing. Using hiring a lot of people, overhiring, using technologies that are not needed, because you don't have complete control over whatever you're, supervising. Okay, if you're a tech company, the CEO or the founders should have knowledge of what's going. Where the corners could be cut. So that's important. You're not just gonna, just go lose on your budget. So I guess that's very important. What was the question? I forgot. Salaries. Salaries. Yeah, okay. you take that. So yeah, we don't take any salaries. We're still trying to make it sustainable first, and as soon as we move out, we'll probably be, leaving our full time. Right. ये जो आपने मेंशन किया ना अबाउट जायंट इन इंडिया बिकॉज दे आर ओवर हायरिंग एंड एवरीथिंग, तो यहाँ से मुझे क्वेश्चन आता है व्हिच आई शुड हैव आस्क्ड अर्लियर, बट आई वांटेड टू नो दिस. लाइक आपकी हायरिंग का जो प्रोसेस था ना, लाइक हाउ डिड इट वर्क? लाइक वर देयर एनी, मतलब क्योंकि अगर आपने 11 लोग आपने रखे तो 11 के 11 तो अच्छे होंगे नहीं स्टार्ट में. सो हाउ वाज दैट? वाज लाइक वर देयर एनी वो जो कहते हैं वो गंदी मछली टाइप पीपल? So operations में I don't think we faced that problem. नहीं operations. You haven't had any We bad faced- hiring experiences Yeah, yet? I did in tech. Lucky you. नहीं, I did. Okay, you did. Yeah, और What was इनका that? नहीं होता operations में. अच्छा. क्योंकि मेरा जो है रियल टाइम काम रहता है, मैं उनको अपने सामने काम कराता हूँ, तो इनका थोड़ा वर्चुअल रहता है. Okay. तो मैं काम था ये ऐसे कर दूँ. So we did hire a couple of people who were not as efficient as we expected them to be. So हाँ, 1-2 bad hirings हुई थी, but I had that in mind कि हाँ भाई. So there was this guy. You have to share it. हाँ. नहीं भाई. So there was this guy from Pakistan. Okay. He used to work with us, and yeah, it's just the joke is that he would take a month for a thing that would take a week max. Okay. And we figured out the code was bad. महीने के बाद भी पता चलता है कि काम हाँ, हुआ ही नहीं. महीने के बाद काम हो गया, बट फिर भी वही इशू है. तो वो सब इशू, इट्स जस्ट फनी दैट that guy is a bit funny the way he talks. That's why I don't want to bring it up. So he has a typical Pakistani. माजिद भाई हमारे हैं ऐसे. हाँ, I know. I have worked with a guy, but I did not like work with him. तो like I interview हुआ था उनके साथ, but फिर वो लगा नहीं. I didn't think that it will work out, so I'm not talking about. नहीं, but we do have a few
people that we hired, and they're very good, they're very loyal to the company for now, and for that thing we have given them certain benefits as well, like ESOPs from company. For the first do have few people, ESOPs? yeah, we do. Nice. So the first few people that joined and have stayed with us even through the tough times, you know, sometimes in the initial phases their salary used to get delayed by 2-3 days, or even a week sometimes, and they then used to, you know, bicker about it, ki bhai nahi aa gaya, I'm going to switch it. So, you know, we remember that, you know, how they support us, and we're now trying to support them. So that's, yeah. So for the viewers, ESOP means that they have a share in your company. Yeah, a certain percentage. Very minor, but we're sure that after, you know, the vesting period, there's a vesting period. So we were looking at a 3-year growth. Okay. So we're sure that if after 3 years they're able to cash them out, they won't need to work for like the next 5-6 years. So it's good for them. That's great. Yeah. So hiring में एक और चीज़ था कि what most of the founders face is they have to micromanage. कि आपने जैसे आपने भी एक का कहा कि उनको काम दिया था, एक हफ्ते बाद, एक मंथ के बाद भी वो काम नहीं हुआ था, then you like आपको फिर से वो करना पड़ता था. तो वो when did that period end for you? Like are you still micromanaging in any department, या right now आप मतलब you know कि the process is being taken care of and I don't have to go and check again and again? We do have to. You still have to. Still have to, yeah. Okay. Because initially जब कोई मेरे ख्याल से कोई भी स्टार्टअप हो तो बाकी जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी ये समझ आना चाहिए कि आप क्या चाहते हो. मतलब आप उनके साथ जब टाइम स्पेंड करते हो उनको भी एक वो आता है अंदर से कि हाँ भाई इसको यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, ये ग्राफ अगर अभी ऐसे चल रहा है ये ऐसे चलना चाहिए. तो अगर आप वो उनके साथ नहीं रहोगे तो वो ग्राफ ऐसे मेरे ख्याल से चलता नहीं है. तो आपको अपना टाइम देना पड़ता है उनके साथ रहना पड़ता है स्टार्टअप, ताकि उनका भी जो है उनका भी गोल वैसा ही आपको सेट करना पड़ता है जो आपका गोल है. हाँ नहीं, there's actually one thing, मतलब ये तो ऑलमोस्ट सभी के साथ होता है और ये बहुत कॉमन बात है कि अगर आप अपनी टीम के साथ नहीं रहते हो तो they also lose the motivation to do anything. You have to be there. Sometimes I have to stay up with the dev. Right. Just so that they know that हाँ हम we are working for a cause. But I'm talking about the other thing that आपने किसी को कोई टास्क दिया है, then you have to, मतलब वो मंकी बिजनेस सॉर्ट कि मैं आपको कोई काम दूं, फिर कुछ दिन बाद मैं आपको वो फिर काम मुझे खुद ही करना पड़े. Like I have to micro, मुझे देखना किसने किया कि नहीं किया. So yeah, we did. That's what the previous guy that we hired, let's say for example, so उसमें वो हो रहा था, we tried to you know not immediately put him in a PIP कि भाई ऐसे कर लो, but we gave him a couple of more chances कि नहीं, if you be lenient with the person, if he understands कि हाँ भाई, you know, he's the kind of the person who's worth it, he'll work for it. If he's not, you know, you can just give him a couple of tries, and if it doesn't work, you just you know move ahead to the next person you want to hire. Okay, so and right now you are saying that it doesn't happen, or no, we filtered out people. Okay, Yeah. so right now the team is like you can trust them now. Yeah, we're hiring a couple of more devs right now, but we have an idea now, like you know who to hire. It took us more than 1 year to get to that point. The same for us, yeah. So it takes a lot of time to filter Yeah, out people. exactly. Sometimes we, you know, still put up with them because हमारे पास कोई और option नहीं नहीं होता. होता है हम Right. Yeah, that's right. ऑपरेशंस में तो मिल जाता है बट टेक में काफी मुश्किल होता है. Right. Okay, so what is, I wanted to know, like what is next for Novo? Currently, in Srinagar, we're trying to get the aggregator's license. Right now, the government has been What supportive. is that? What is the aggregator? So it's a license that you use and go by the terms of it in order to be the mediator between someone booking a ride and you providing the ride. So it's for everyone, you know, every business all over. There is, they need a taxi aggregation license, Okay. so that they abide by the rules. Because other than that, you know, there won't be they could charge a certain amount. Right. They could. So there's a license for that, and we've applied for that, and we're in the process of, we've already gotten the letter of intent from the government, but I think the license would be furnished by the next month. And after that's done, we would be including autos, bikes, airport rides from the airport, cars available there, and a couple of things more that are, you know, a bit of secret right now. ठीक है, so we'll get to know about that eventually, right? Yes, very soon. Right. तो ये एक और चीज़ है ना, like the compliances of the company, like you are handling that yourself, जो भी compliances होती है, license लेना, ये सब. वो सब मैं देखता हूँ काम Does लाइसेंस that का. affect your day to day, जो आपको मतलब
because ऐसा मेरा मानना है कि the founders should be discussing कि what should be the next offer we are creating, what should be the next strategy we should be using, but unfortunately founders are GST के ऑफिस में धक्के खा रहे हैं, लाइसेंस ढूंढ रहे हैं, so Yeah, fortunately we have delegated people for that. So you have already have delegated. Yeah. So do you suggest people who are starting up, should they, what should they do about it? Because I mean, they should learn about it first, the process, so that when they go for a different state, they would know what to do. right, because many people don't know it. They say हाँ ठीक है ये कर देते हैं, दुकान वगैरह कुछ बना के चल जाए. They don't know there are 100 compliances that you have to go through every year. To know it firsthand is important. Yes, but then if you, after knowing it, you know it's a repetitive work, you delegate someone and it works. I learned it the hard way. I had to pay a huge penalty because for ROC compliances मैंने नहीं किए थे पहले साल में, and बहुत बड़ा penalty उसका देना पड़ा था. And you were starting in Delhi, that's why. No, we had registered here in Srinagar only. अच्छा, okay, all right. तो उसका भी हमें, so we had to pay penalty for that. Anyway, so and में आप कोई, do you want to share any message with the viewers who are watching, which I'm hoping are the youngsters who are maybe willing to start up or are interested in the startup ecosystem of Kashmir? Do you have any message for them? आई थिंक मेरा मैसेज तो यही रहेगा कि हर किसी को ट्राई करना चाहिए, जो वो चाहे वो ट्राई करना चाहिए. घर पे बैठ के कोई फ़ायदा है नहीं, हम घर पे बैठेंगे ये होगा वो होगा. एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए लाइफ में, क्योंकि कल को फिर रिग्रेट रहता है इंसान को कि वो क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं हुआ. तो घर पे बैठने से बेहतर है कि ट्राई करना. और आई थिंक मेरे ख्याल से कि जल्दी ट्राई करना. मतलब जब there's this case that happened, I've read about when you read about Steve Jobs. Okay, when they released the first Mac, so he suggested the price be in a certain limit, and no, okay, the point was that he wanted a certain thing to be perfected because it was important for his own conscience कि हाँ भाई ये perfect होना चाहिए, and because of which he delayed a couple of weeks, and during that time Microsoft released its first, I guess, 95, so they lost a lot of market. Shit. So yeah, you start as soon as possible with the MVP, whatever you have, you grab the market, and then you reiterate on it and improvise on your product. So I guess if you create a perfect product, you'll end up in disappointments. You have to test the waters first. It's very important. And I strongly believe that you have to start young, because first thing यही है कि that you don't have much to lose. Even though like I'm not saying कि अगर आप 30s में हो 40s तो मत कर लो, but you have a lot to gain if you are young. Yeah, because you don't you're have lucky much if to you lose. start young. हाँ, right. You are lucky if you start. you are in your 30s, you have responsibilities. Right. So You have उस family टाइम to look पे after. इंसान अगर सोचेगा भी तो बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको सोचने नहीं देगी कि मैं Exactly. ऐसा करूं, ये करूं, वो करूं. अभी And currently India's startup ecosystem, I've seen like CEOs 18 years old. Right. Right. And yeah, that's a good thing. But I think even that I don't buy that much, because hardly any of them is creating profit. So I don't, because Yeah, like obviously you I'm know- not taunting you for No, no. not creating a profit, but I'm just saying they are like, we are celebrating them for the wrong reason. I think so, because we are not Yeah. raising them for the value they are creating. We are celebrating them Yeah. for the funding they have Yeah, exactly. gained, and I don't think that is something that we should Yeah, that's true. celebrating. So. Yeah. But yes, I get your point. Yeah. If you start, even if you fail young, you'll know what to do later. Right. That's why. Yeah. Completely agree. So thank you so much, thank you very much for a very valuable time, माजिद भाई, फहीम भाई. Thank you. बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बिजी शेड्यूल से इसके लिए वक्त निकाला, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, एंड मैं भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप दोनों से. Thank you Thank so you so much. much. Thank you.